कोरोना संकट के बीच चरमराती दिख रही अर्थव्यवस्था के मसले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं। एक्सपर्ट से चर्चा करने की इसी कड़ी में राहुल गांधी ने गुरुवार को बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने मजदूरों और गरीबों का एक बार फिर से मुद्दा उठाया। Well off people can deal with this type of a situation. They live at home. They have a ecosystem which is comfortable. But what it's been for the poor people, for migrants, it's completely devastating. They've lost confidence actually. काफी लोगों ने मुझे बोला कि बिल्कुल भरोसा खो गए हैं, भरोसा ही नहीं बचा. And that I think is a very sad thing and a dangerous thing for the country. तो वहीं राजीव बजाज ने यहाँ की स्थिति को लेकर कहा कि सभी के लिए यह एक नया माहौल है, हम इसमें ढलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कारोबार के साथ बहुत कुछ हो रहा है। Right from the beginning, I mean, this is my view. Whether it was in terms of how this problem was to be perceived, I don't understand why, despite being an Asian country, we sought not to look at what was happening east, but we looked at at Italy and France and Spain and the UK and subsequently the US, which are really not the right benchmarks in any sense. Whether it's by inherent immunity, temperature, demography, predisposition to thrombosis, etc. Everything that the scientists and doctors have spoken of. We should never have been looking there, even in terms of how to approach this from a medical point of view, starting with the bogey of medical infrastructure. We are all aware that there can be no medical infrastructure that can be adequate to combat something like this. But nobody was willing to explain the maths to us that we are so many people and if so many are vulnerable, 5% or whatever it is, this is what that number looks like and this is how we are preparing ourselves, or perhaps we cannot prepare ourselves. Maybe that's not a politically appropriate thing to say. But as Narayan Murthy ji always says, when in doubt, disclose. I think we have fallen very short of disclosing facts, logic and the truth. राहुल गांधी ने पूछा कि किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो जाएगा, ऐसा विश्व युद्ध के समय पर भी नहीं हुआ था। जिसके जवाब में राजीव बजाज ने कहा कि भारत में एक तरह का ड्रैकोनियन लॉकडाउन है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ की तुलना में कई देशों में बाहर निकलने की अनुमति थी। I don't think anyone imagined that the world would be locked down in this way. I don't even think during the World War, the world was locked down. I think even then things were open. So it's a unique and devastating sort of phenomenon. When you say the world has never been locked down like this, India has been locked down. What I have referred to as a draconian lockdown. This kind of lockdown I am not hearing about from anywhere else. All my friends and family living across the world have always been free to step out, to take a walk, to go and buy something they require, to go and visit someone and say hello. So in terms of the social and emotional aspects of this lockdown, they seem to have been in a much better place. गौरतलब है कि राहुल गांधी की ओर से लगातार कोरोना संकट के बीच एक्सपर्ट से बात की जा रही है। राहुल ने अपने सिलसिले की शुरुआत रघुराम राजन से की थी, जिसके बाद नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी से भी चर्चा की। इसके अलावा राहुल गांधी अब तक हार्वर्ड के प्रोफेसर से लेकर प्रवासी मजदूरों से भी चर्चा कर चुके हैं।